Yeah, I have launched a poll. Please participate in this poll and then we will start the session. Okay. Please participate in the poll. As soon as you participate in this, we will start the session. And this could be probably the last session of this current electricity. Okay. So then start करते हैं session. So in the previous session, what we have did, we will just have a revision of that case. So सबसे पहले we have studied about the EMF of cell. So what is the EMF of cell? If I just elaborate in this topic, ईएमएफ होती है जब भी कोई सेल बिना विदाउट एनी कनेक्शन आप देखते हैं किसी सेल को, तो जो फुल कैपेसिटी होती है सेल की, द कैपेसिटी ऑफ सेल वी मीन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट अ सेल कैन जनरेट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ ही हम आपको देखने को मिलता है। ईएमएफ इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो कनेक्शन और देयर इज नो लोड कनेक्टेड टू द बैटरी। ठीक। So EMF of a cell is defined as the potential difference between the positive and negative electrodes in an open circuit. Okay. So that is the definition of the EMF that we have learned in the previous session. After that, we have did the series combination and parallel combination of cell. So series combination of cell में हमने देखा था कि cell when one end of the negative end of the cell is connected to the positive end of another cell, or you can say the current that is flowing through the cell will be same. तो जो करंट इनसे फ्लो हो रहा है, इफ इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द करंट इज हैपनिंग इन द कनेक्शन ऑफ सेल, दैट पर्टिकुलर कनेक्शन इज टर्म्ड एज सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज में क्या होगा, जो इंडिविजुअल ईएमएफ होंगे वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, बट फॉर दैट जो ओरिएंटेशन है सेल का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ द सेल विल रिमेन सेम, व्हिच मींस if firstly you entering with the positive negative series, this is positive then negative, then another cell is also in the same manner, तो दूसरी सेल भी जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव ही होनी चाहिए। इफ अ सेल लाइक दिस विल हैपन टू यू, नेगेटिव फर्स्ट एंड पॉजिटिव लेटर, सो द ईएमएफ ऑफ दिस सेल विल बी एंटर्ड एज माइनस ई। ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन आल्सो कि if m cells in n cell out of n cell m cell are connected incorrectly or wrongly connected,
then what will be the final EMF of the cell that we have discussed in the previous session. Similarly, R equivalent, which is the internal resistance of the cell, it's R1 plus R2 plus R3 up to R. Then the parallel combination के बारे में if I talk about, the R equivalent is given by, देखो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है बस, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रेज टू पावर माइनस, इट्स अल्टीमेटली मीन्स की 1/R इक्विवेलेंट is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. This clear? So this is the little bit of modification. This minus one power means कि we are talking about our 1/R. ठीक है ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक? Anyone has any kind of doubt, you can ask. So after that we have did key for charging of a cell. If we are charging a cell, then the potential difference across the terminal of a battery is given by एप्सिलॉन प्लस आई आर. एप्सिलॉन को आप ई भी बोल सकते हो और दिस ई मींस द ईएमएफ ऑफ सेल. ठीक है, तो जब भी आप चार्जिंग कर रहे होंगे सेल की तो उसका जो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ शेल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द शेल इटसेल्फ. ठीक है, एंड फॉर डिस्चार्जिंग कंडीशन द टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ सेल. और वो लेस देन क्यों हो रहा है? क्योंकि देर इज अ लॉस ऑफ पावर ड्यू टू द करंट फ्लो इन द इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो दिस इज यू मस्ट कीप इन माइंड बाय सॉल्विंग. इट विल हेल्प यू आउट इन द व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस. सो यहाँ पे इफ यू सी दिस क्वेश्चन, सेल डिलीवर्स इक्वल पावर टू लोड रेसिस्टेंस R1 and R2 इंडिविजुअली, फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल. सो लेट्स से दिस इज R1 के लिए सर्किट ऑफ द सेल. This is R1, this is the EMF of cell, and this is internal resistance. And similarly, we have R2 for this cell. Just a second. This is the internal resistance, and this is R2. ये E same cell है, तो internal resistance will also same. So in this case, the power delivered by this battery is same. It is given in the question. The equal power deliver कर रही है load resistance को. So in that case, what would be the internal resistance of the battery? So if I talk about in the very first case, for R1, what is the power delivered? So we can say that P is equals to what? I square into R. Okay. Or I in this circuit, I have already told you in the previous case that I is given by epsilon upon capital R plus small r. Okay. This is how we are going to find out the current. In both the situation, current will be same. Okay. Current will be different because इसके लिए क्या होगा? R1 plus R होगा, and for this, let's say I dash is this epsilon upon R2 plus R. So for first battery, the P1 is given by I1 square into R1. Okay, I1 is what? Epsilon square upon R1 plus small r whole square into R1. This is the value of P1, and this is equation number 1. Okay. Now for second, we can say that P2 is equals to what? I2 square upon I2 square into R2. I2 की value will be epsilon square upon R2 plus small r whole square into R2. ठीक है, this is equation number 2. Now according to question, the cell delivers equal power, which means P1 is equals to P2. So by applying this condition, you must put equals to these points, R2 plus small r whole square, or R1 plus small r whole square into R1 is equals to epsilon square upon R2 plus small r
whole square. ठीक है, and multiply by R2. So this epsilon square will cancel out. If you will see here that you can open this expression and then explain, or what simply you will do, you take R1 by R2 one side, and this R1 plus small r upon R2 plus small r whole square on the other side. When you shift this, take the square root of the powers, so it will become R1 plus small r divided by R2 plus small r. ठीक है, equals to square root of R1 divided by square root of R2. When you multiply this thing, it will become R1. So root R2 will multiply this expression. R1 into root R2 plus root R2 into small r, which is equals to R2 into root R1, where just the cross multiplication, plus square root of R1 into small r. What you will do? You will take small r common, and R1 into root R2 minus R2 into root R1, okay, divided by, when you take this on the left hand side, so it will become square root of R1, square root of R1 minus square root of R2 is equals to small r. So you can leave this answer here only, and if you want to solve it more, you can do one more thing here, that you can take root R1 and R2 common on the upper side. So it will ultimately will become square root of R1 minus square root of R2 divided by square root of R1 minus square root of R2 is equals to small r. This and this will cancel out. So you can say that the small r here is equals to square root of R1 and R2. ये आपका आंसर है. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई. It's clear to you all. We will move forward in the lecture. Okay. Okay. I hope this is clear to you now. Okay, Sneha. Very good. ক্যামেরা অন করিছো? করি দে, মো করি লিছু। মুখ দেখা গৈছে? হ্যাঁ? কথা শুনা Sorry, গৈছে? anyone is saying something? Please put yourself on mute. Now, if you solve this question, in the given circuit, the terminal potential difference of the cell is. यहाँ पे आपको एक cell given है. Okay. You have to solve the potential of this cell. What is the potential of this cell? Terminal potential, I have told you that terminal potential can have a greater value of the EMF of cell, lesser value than the EMF of cell, or equal to EMF of cell. But यहाँ पे this will not be equal to EMF of cell because internal resistance is present. Whether it will be epsilon plus IR or epsilon minus IR. So for that case, it's very simple. By the way, a very important, sorry, a very easy circuit is given to you. So this is 4 ohm, this is 4 ohm, and this is 3 volt. Okay, and the internal resistance of the battery is 1 ohm is given to you. Now, what you can do, there are two methods to solve this question. Either you can apply the KVL and KCL that we will be discussing later, and you can apply the series parallel combination of circuit. Okay, so you can see that these two resistance are in parallel with this particular battery. So you can apply the what? You can apply the parallel equivalent. So R equivalent will become what? 4 into 4 divided by 4 plus 4.
That will become 16 upon 8, which is 2. So it will become a half value if the both the resistance are same in parallel. So the final battery that, or the final circuit that we are having is this, like this. So the resistance here is 2 ohm, and here the internal resistance is 1 ohm. Here the battery is 3 volt. Okay. Up, this is very simple. I have told you that I is equals to will become E upon capital R plus small r. Okay. Because single load resistance we have, single small r we have, and single battery. So epsilon upon r plus r, what we can do? Epsilon is 3, r is what? 2 plus 1 ampere of the current will be there. If you are able to find out the current, so you can find out the resistance voltage difference also. Since these two resistance are in parallel, so whatever the potential across this, the same will be the potential across this. Because in parallel circuit, the potential difference remains same, current will be different. Okay. So here you can say the terminal potential of difference of the cell is asking. So the cell ka terminal difference is from here to here. Okay. This cell is providing a 1 ampere of current. Okay. The load across this battery or this cell is 2 ohm. So we can apply Ohm's law. V is equals to IR. I is 1 ampere. 2 is the resistance, load resistance basically. So here we have the 2 volt current. 2 volt potential difference. Okay. Clear है? Now, for your knowledge, I would say कि when you are calculating the potential difference or the terminal potential difference, now you do not include this internal resistance because you already included it in the calculation of current. Okay, so it is not required to include this again and again. Got it? And because it will confuse you then. Suppose someone include this here, so what would happen then? If someone include it here, so the answer will be 3 volt, but this is incorrect. The correct answer is 2 volt. And this question is in JEE Main 2024. Okay. So see how many of you are able to solve the JEE Main questions. That will also like give you a boost. ক্যামেরাখন অন করে দিও আর চাইলো Please mute yourself. Who is putting yourself on mute? Unmute. Okay, do not disturb the class, please. So now we will discussing about the Kirchhoff's law. So Kirchhoff rules are very clear. Kirchhoff's given these rules because to solve the complex circuits. Suppose in any circuit we are not able to find out the parallel or series combination of cell or parallel or series combination of resistor. Then what to do in that case to calculate the potential difference across a resistor or to calculate the current in any branch of the circuit. So to solve these types of complexities, we introduce the Kirchhoff's law here. So Kirchhoff's basically gives two laws, and these two laws are very, very significant and yet very important also, and they are very basic also. Okay. You all have heard about, since your beginning of the physics, you are studying about the conservation of mass, conservation of energy, and conservation of charge. Okay, conservation of charge is just introduced you in your 12th class, but I know that you would know about it. Okay. So conservation of charge and conservation of energy per based heat, we have these two rules or two laws of Kirchhoff's. Okay. So the very first law of Kirchhoff first law is junction rule. It's also named as junction rule. So what is the statement? Firstly, we introduce that the statement is that at any junction, the sum of the current entering the junction is equals to the sum of current leaving the junction. Or in other words, you can say the sum at the junction, the net current is zero. Okay. Clear? The net value of current at any junction is zero or node is zero. Okay.
Or in the other word also, there is one more definition you can see. At any junction, the sum of incoming current is equals to the sum of outgoing current. So as you can see that these branches are meeting at this point. So this will be a junction where more than two branches are connected. Okay, that particular point is termed as junction. Okay, so this point is a junction. Here I1 is incoming, I2 is also incoming, and I3 is also incoming to this junction. You can clearly identify that these three currents are coming to the junction, and these two currents I5 and I4 are leaving the junction. So that is why, according to Kirchhoff first law or junction law, we can say that I1 plus I2 plus I3, the net incoming current is equals to the net outgoing current. Okay, why and how this current rule or this junction rule work? Because if there is if you just suppose a pipe of water flow. Okay, suppose we have some pipes here. Okay, so let's say some water is coming from here and going to in these two branches. Okay, so what happen if we know that because of the conservation of mass, whatever the mass of water come to this pipe, the same mass of water will be distributed in these two. Let's say the mass of water is coming is m1, and here we have m2 and m3. Okay, as the outgoing mass. So we can say because of conservation of masses, m1 is equals to m2 plus m3. It's very obvious. What happen if m1 is not equals to m2 plus m3? So there is some accumulation of the charge here or the mass. So due to accumulation, the pipe will burst at that point. And this will happen when you have if you have operated some pipe, just lock the pipe in the front from where the water stream is coming out, just lock it. से बंद कर दो आप. So what you will see, either the pipe will broke, और जहां पे आपने कनेक्ट किया हुआ है पाइप, वहां से पाइप निकल जाएगा. बिकॉज देर इज accumulation of वो जो इनकमिंग वाटर फ्लो है, वो आउटगोइंग वाटर फ्लो के इक्वल नहीं है. बिकॉज आउटगोइंग वाटर फ्लो यू हैव रेस्ट्रिक्टेड. So that is why वहां पे accumulation of mass of water is happening, and वहां से पाइप ब्रस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. So similarly in current also, if incoming current is not equals to the outgoing current, so in that case the accumulation of charge will be there, and that is not possible. Okay, accumulation of charge is not possible. That is why we can say if accumulation of charge is happening, ultimately it disturbing the rule, the conservation of charge. Okay, na? So explanation में you can write that because of there is no accumulation accumulation of charge. So if in question, if it is asked to you that Kirchhoff first law or junction rule follow which law? So you will say that it follows junction rule. Sorry, charge conservation. Charge conservation. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज नोट इट डाउन. किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, जेएनवी भावनगर को. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते
Now, the second law is Kirchhoff's loop law. It's also termed as Kirchhoff voltage law. Okay, so always remember that the multiple names will disturb you in the questions. Then it is also termed as voltage law or voltage law. Okay, what is this law actually? तो स्टेटमेंट पहले हम गौर से पढ़ेंगे स्टेटमेंट व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लूप लॉ सो बेसिकली इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी in electronic circuit is related to potential because we know that potential is nothing but potential energy per unit charge. So that is why conservation of energy, if we apply, so it will say that the algebraic sum of change of potential around any closed loop involving resistor and cells in the loop is zero. So whatever is the number of cells are present in the loop, okay? Whatever is the number of cells are present in the loop, that will not be what? I'll solve question, ठीक है ना? Who is this Acer and all? I do not know your name. I'll going to solve the question. Just have a little patience. Okay, firstly, I will complete what I have to complete. Got it? So Kirchhoff's loop law is that the algebraic sum of the change in potential around any closed loop involving resistors and cell in the loop is zero. So whatever the number of cells and number of resistors present in the loop, if it is making a closed loop, okay, closed loop means there is a flow of current, okay, like this, closed loop, clear? इस तरह का अगर कोई क्लोज लूप है इसमें अगर आप पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप देखोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सो इन द क्लोज लूप द चेंज इन पोटेंशियल इज what zero the algebraic sum of change in potential so whatever the change in potential across this resistor across this battery across this load resistance is happening all of them will be a zero value and why it is so because the potential function itself is the function of distance तो जो आपका पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा है वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन suppose you are moving from here to calculate the potential and again you are reaching at the same point so when you are returning to the same point the potential will be zero automatically because it depends on the distance so from where you have started if you are coming back to that point your distance or displacement is zero and that case your displacement is zero and this potential is a function of position only so the position is same so that is why the algebraic sum of the change in potential is going to be zero ठीक है यहाँ पे लिख सकते हो कि because potential potential is a point function and since this potential is a point function so it depends on point to point and if we are returning to the same point in closed loop so the potential will be zero in that ठीक है अगर आप यहीं पे किरचॉफ लॉ लगाना मैं आपको बता सकता हूँ हाउ टू अप्लाई रूल्स ठीक है हाउ टू अप्लाई KVL in what in a closed loop
तो चलो इसी में अप्लाई करते हैं। तो लूप की डायरेक्शन जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो, इट्स अप टू यू टोटली, ठीक है ना। वट एवर द डायरेक्शन यू वांट टू चूज, यू कैन चूज। बट सपोज देर आर टू लूप्स इन दिस सेल। सो जो पहले लूप में जो आपने डायरेक्शन लिया है, अदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन यू हैव टू टेक ऑन द अनदर, ठीक है। सो दिस मस्ट बी कीप यू इन माइंड। डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप इज सेम। जो भी डायरेक्शन आप लोगे लूप में, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। सो इन दिस केस जो आप इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, लेट्स से दिस रेसिस्टेंस इज आर, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, A to B. So if you are taking the potential difference in the direction of current, so it will be what? I into R. I have taken capital I, so capital I is the current. So potential difference इस resistance में कब होगा? Positive when you are going in the direction of current, and when you are moving opposite direction, तो potential difference across BA, तो BA के लिए हो जाएगा minus I into, that is a simple case. एंड यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको याद है, ठीक है। either this you can remember or I'll tell you one. So suppose हमें यहाँ पे इस वाले सर्किट में we want to apply this Kirchhoff's voltage law KVL, so we are moving in this direction. तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो ना बैटरी से, जो भी बैटरी प्रेजेंट है वहां से स्टार्ट करो. सो यू आर सीइंग दैट यू आर हिटिंग विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. सो पुट इट एज माइनस एप्सिलॉन. So whatever the potential, sorry, whatever the plates you are hitting with in the battery, सो उस प्लेट के साथ ही साइन लगा करके. सपोज अगर मैं ऐसे मूव करता इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो मेरे पास पहले कौन सी प्लेट आती, पॉजिटिव प्लेट, सो आई विल राइट इट एज प्लस, ठीक है. क्लियर है. तो अभी मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. और करंट भी आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हो, बिकॉज इन द लास्ट यू विल गेट अ माइनस साइन, ठीक है, इफ योर डायरेक्शन इज इनकरेक्ट. सो यू जस्ट हैव टू करेक्ट द डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाट. नाउ वी आर हिटिंग विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फर्स्ट ऑफ ऑल. मैंने यहां से स्टार्ट किया है पॉइंट ए, और वी हैव टू रिटर्न दिस पॉइंट ए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हिटिंग विद द नेगेटिव टर्मिनल, सो माइनस ई. अगेन वी आर मूविंग अक्रॉस दिस पोटेंशियल, और अभी मैंने बताया कि अगर करंट की डायरेक्शन में यू आर मूविंग विद द लोड रेसिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आई इंटू आर, स्मॉल आई, ठीक है. प्लस सेम द करंट की डायरेक्शन में ही यू आर मूविंग into this, what, into this internal resistance, so that is also positive, ठीक है. Now what you can see, I into R plus I small I into capital small R is equals to epsilon. We take this on the left hand side, so from here you can say the same expression is coming out, the expression that we have derived on that case na, same expression, which means we are right, and we have assumed the direction of current is also correct. सो एक सिंपल सा रूल है कि बैटरी का जो टर्मिनल आप घूमते हुए जो भी टर्मिनल आप हिट कर रहे हो, सेम साइन के साथ ही आपको उसका पोटेंशियल और ईएमएफ लिखेंगे, ठीक है. क्लियर है. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो, गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट रिमूव दिस. हाँ, आप देखो. नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस.
JNV Nagaon and your name is Afsana. ठीक है, and voice is not clear. What do you want me to explain? The Kirchhoff's loop law or what? Kirchhoff's junction law. Showing direction. Direction को कैसे show करना? Direction is completely up to you. You want to show it in a positive direction. So if you want to show it in a anti-clockwise manner, तो clockwise manner में भी show कर सकते हो, anti-clockwise manner में भी show कर सकते हो. ठीक है? क्लियर है? जितनी ब्रांचेस बनेंगी उतने लूप बनेंगे. जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो. हाँ हाँ, लूप रूल अभी समझते हैं. देखो यहीं पे समझते हैं. देखो ये हमारे पास एक लूप रूल है. यहाँ पे कितनी ब्रांचेस हैं? देखो एक ब्रांच तो एक लूप तो ये बन गया, लूप नंबर 1. एंड एक एक लूप ये हो गया, लूप नंबर 2. ठीक है. अब देखो दोनों लूप में घूमेंगे. मैंने क्या बताया था आपको? डायरेक्शन लूप में क्या रखनी है? सेम रखनी है. अगर पहले लूप में आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू किया, इफ यू स्टार्ट रोटेटिंग in anti-clockwise sense in first loop, so in the second loop also you have to take the sense as anti-clockwise. ठीक है. So in first loop, let's say this is the loop. नेम कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ABCD. ठीक है. So in first loop, in first loop, what loop is ABCA. ठीक है. This, and we are moving in anti-clockwise. This is the anti-clockwise sense. क्लियर है? अब देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने ए पॉइंट से घूमना शुरू किया, तो ए से बी तक कुछ नहीं है. ए से बी तक इज नथिंग. देन ए से बी के बाद हम कहाँ पे गए? हमारे पास आया 4 ओम का लोड रेसिस्टेंस. अब मैंने देखो करंट की डायरेक्शन भी क्या मान ली? अपने आप से यही मान ली. जो मैं लूप में घूमने की डायरेक्शन ले रहा हूं वही डायरेक्शन आप करंट की मान लो. सिंपल सी बात है. ठीक है. अब जैसे ये करंट आया घूम करके, लेट्स से दिस करंट इज I1. ठीक है. उसके बाद ये करंट I1 हो गया, ये यहाँ पे जाएगा I2 में, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा I3. ठीक है. तो ये हो गया ऐसे, ये और फिर ये. ठीक है. क्लियर है? तो जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हो अपने, देखो क्वेश्चन सॉल्विंग को आसान करने के लिए आपको चीजें अपने आप से चुननी होंगी. यू हैव टू सिलेक्ट द थिंग्स बाय योरसेल्फ. ठीक है. सो वी हैव सिलेक्ट द सेंस एज एंटी क्लॉकवाइज, सो द करंट की डायरेक्शन वी आल्सो सिलेक्टेड एज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. सो वी आर मूविंग अक्रॉस दिस 4 ओम रेसिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो बताओ क्या होगा इसका चेंज इन पोटेंशियल? कितना होगा? I into R. I is I1. R is what? 4 plus. We are crossing this. Now, which terminal of the battery we are hitting? Positive or negative? We are hitting the positive terminal here. So positive terminal, and what is the capacitance of the battery? Sorry, what is the EMF of the battery? The potential of the battery is 6 volt. ठीक है. तो पॉजिटिव प्लेट से हिट किया, सो +6 आपने लिखा. ठीक है. अब इस लूप में अगेन मूव कर रहे हैं. देखो इसी लूप में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो I2 का कोई वैसे काम होगा भी नहीं. ठीक है. वैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पे I2, बट I2 का कोई काम होने वाला नहीं है. ठीक है. तो वी आर हिटिंग विद अ नेगेटिव टर्मिनल नाउ, तो वी मेंशन इट एज -10 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस लूप में तो और कुछ नहीं है. ABCA लूप में देर इज नथिंग. देर इज 4 ओम रेसिस्टर, 6 वोल्ट बैटरी एंड 10 वोल्ट बैटरी. तो यहाँ पे हो गया ये. अब I1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? देखो I1 इंटू 4 प्लस और -4 इज इक्वल टू 0. I1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4. तो I1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है? 1 एम्पियर. ठीक है. इजी है ना कैलकुलेट करना? अब देखो सेकंड लूप में आप खुद से लगाओ, खुद से लगाओ और आंसर मुझे बताओ फटाफट. आपके पास 1 मिनट है. सेकंड लूप में अपने आप से लगाओ और आंसर बताओ. सेकंड लूप इज ऑल्सो सेम, 2 बैटरीज 1 रेसिस्टर. अप्लाई करो और बताओ मुझे.
Giving you 1 minute to solve this question. Okay. So what is this Afsana? Have you got this loop rule? Try to solve the second loop. चलो मैं सोल्व करता हूँ एंड देन वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. तो सेकंड लूप है. इन सेकंड लूप व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड लूप? ए से स्टार्ट करेंगे. ACDA. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप. इट्स योर चॉइस. कहीं से भी. तो यहाँ मैंने ए से स्टार्ट किया है तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा. बट आप हमेशा ये याद रखना यू स्टार्ट विद दैट पॉइंट जो कि दोनों में कॉमन ना हो. दिस ब्रांच इज कॉमन टू दिस लूप ऑल्सो एंड दिस लूप ऑल्सो. तो ट्राई टू अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ. ठीक है. अब देखो जैसे ही मैं सबसे पहले मूव किया A to D तो मुझे क्या मिली? पॉजिटिव प्लेट मिली. तो +10 आ गया. +10. उसके बाद मैं यहाँ आया I3 के साथ ही मूव कर रहा हूँ. I3 की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूँ. So what I hit with? The negative terminal of this battery, -4. And then again, moving in the same direction with the current. So potential drop across this 2 ohm is 2 into what? 2 into I3, I0. Okay. Now, what we can say that 10 minus 4 is what? 6 plus 2 I3 is equals to 0. Now देखो यहाँ पे चलो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी. इट्स ऑटोमेटिकली कम दैट I3 is equals to -3. 2 6 is 3. Sorry, 2 3 is 6. So -3 ampere, which means that the direction that we have taken of the I3, we have to take the opposite direction. ठीक है. तो ये देखो अपने आप ऑटो करेक्ट मोड में है. ठीक है. ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेगा ये अपने आप. तो I3 का मैंने जो डायरेक्शन दिखाया था ऐसे, ये किस तरफ होगा? इस तरफ होगा. ऐसे होगा. ठीक है. क्लियर है. एंड लेट से यहाँ पे आपने I2 करंट दिखाया था. अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नोडल रूल लगा सकते हैं. नोड रूल मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल. तो किसी भी पर्टिकुलर नोड को पकड़ लो जहां पे 3 से ज्यादा ब्रांच कनेक्टेड है. इसे नहीं ले सकते. यहाँ पे तो 2 ही है. ठीक है. यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर C पे. सो एट C, ये दोनों रूल क्लियर हो जाएंगे. एट C देर आर 3 ब्रांचेस आर कनेक्टेड. तो इसे क्या हम बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे. अब देखो यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन सा है? I1 है और I3 है. वी कैन से दैट I1 प्लस I3 विच इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू I2. और I1 कितना है? 1 है. और I3 मैंने कितना लिया? अब देखो यहां से -3 मत लेना, बिकॉज यू हैव चेंज द डायरेक्शन नाउ. ठीक है. अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करते हो और तब ये डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो आप. बट यहाँ आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो नाउ यू हैव टू कंसिडर I3 एज पॉजिटिव. सो 1 + 3 इज इक्वल टू I2. तो I2 का मतलब हो गया मेरे पास कितना? 4 एम्पियर का. ठीक है. क्लियर है. अब देखो ये 4 एम्पियर का करंट आया यहाँ पे. 4 और 4 एम्पियर से ये इसमें चला गया I3 की फॉर्म में 3 एम्पियर. और यहाँ पे चला गया ये 1 एम्पियर. तो देखो रेसिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है. तो रेसिस्टेंस बढ़ा तो करंट की वैल्यू भी कम होगी. 1 एम्पियर इज ऑन. यहाँ पे रेसिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू. क्लियर है. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ. क्लियर है सभी को? ठीक. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन टू यू. चलो क्वेश्चन करते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोविंग पर सेकेंड इन अ फिलामेंट ऑफ 110 वॉट बल्ब ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट इज। तो देखो जेई मेन में आया हुआ सवाल है, करो इसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट ऑफ 110 वाट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्टेज। ठीक है, देखो जेई मेन का सवाल है। मैंने सिर्फ why I have put this question in front of you because I want to show that how easy question is being asked in JEE main। तो देखो we know that power is nothing but V into I। ठीक है, पावर इज गिवन व्हाट 110, वोल्टेज इज गिवन 220, आई का वैल्यू आ गया, आई इज हाफ एम्पियर आ गया। क्लियर है। अब आई क्या होता है, देखो पर सेकंड ऑटोमेटिकली पूछ रहा है पर सेकंड। सो आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2। सो यू कैन से दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। अब कितने टाइम के लिए पूछ रहा है, पर सेकंड पूछ रहा है, तो डेल्टा टी को 1 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड, ये करंट था, डायरेक्टली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधी बात है। तो डेल्टा क्यू यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा क्यू इज 1/2। और डेल्टा क्यू क्यू का आप क्या लिख सकते हो, एन इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो 1/2, तो यहाँ से एन क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ई। और ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 इंटू 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19। अब ये 19 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 रेज टू द पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3.2। देखो अब डिवाइड कर सकते हो आप, इसमें से 10 ले लो कॉमन, 100 कर लिए, चलो 10 रेज टू द पावर 17 रह गया। यहाँ पे आप कर सकते हो 18 करो, और 1 पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो एक ऊपर चली जाएगी, 0। यहाँ से कैंसिल कर सकते हो इसे, 4 8 जा 32, 25, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 3.3 आ गया ना, 8 3 जा 24। तो यानी कि 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी को क्लिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये जेई मेन में पूछा गया सवाल है। सर वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, मतलब किरचॉफ्स लूप रूल पे ना। ठीक है, वी विल नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे ना, क्या दिक्कत। क्वेश्चंस तो बहुत है मेरे पास। यू विल टेल मी कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू वांट टू सॉल्व। चलो एक छोटा सा टॉपिक है वो सब पढ़ लेते हैं और फिर फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, एंड द टॉपिक इज व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, विच वी यूज टू फाइंड आउट द मैनी वेज में एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की। अननोन रेसिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको बस इस तरह का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पैरेललोग्राम एंड बीच में भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस होगा, मैंने यहाँ पे हटा दिया उस रेसिस्टेंस को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सिंबल बना रहता है ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज ए गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से करंट चलेगा, करंट दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ से फिर से दो ब्रांचेस से मिलके इसमें आएगा। तो ये दो एसी जो है ना, एसी इज कॉल्ड दी बैटरी आर्म। इस एसी को क्या बोलते हैं, बैटरी आर्म बोलते हैं, बिकॉज दीज एंड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद व्हाट इज दिस बीडी, बीडी इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर आर्म, बिकॉज एक गैल्वेनोमीटर इज आल्सो कनेक्टेड टू दिस। ठीक है, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, विल कम टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात रखनी है याद, कि ये जो बीच वाले ब्रांच होते हैं ना, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच, इन दिस ब्रांच देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे जो करंट होगा विच इज आई जी, करंट इन गैल्वेनोमीटर, इज इक्वल टू जी। ठीक है, नाउ दिस R2/R1 इज इक्वल टू R4/R। ये सिंपल इसका लॉजिक। ये जो रेसिस्टेंस है ये R2/R1, ये वाले सेम, इनका रेशियो, ये वाले इनका रेशियो, और इनका रेशियो क्या होगा, सेम, R2/R1 R3/R। तो यहां से मेरे पास ये सर्किट कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ये। और नीचे भी मेरे पास दो रेसिस्टर, तो दोनों सीरीज में है, फिर दोनों के दोनों पैरेलल। तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों इस कॉमन रेसिस्टर से जुड़ी हुई है ना, आर से। तो ये भी एक व्हीट स्टोन टाइप ऑफ ब्रिज ही है। ठीक है, मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ,
लेट मी शो यू दिस, 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 अब ये और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो ये जो के आर है, दिस इज के आर। यहाँ ये बीच वाला रेसिस्टर देखो, दोनों के बीच में कॉमन है ना, दोनों के दोनों इससे जुड़े हुए हैं। अब देखो ये वाला टर्मिनल तो सिर्फ यहीं से ही है, ए से जुड़ा हुआ है, ये वाला टर्मिनल इसका बी से जुड़ा हुआ है। पर इस आर के दोनों टर्मिनल आप देखो, ये वाला टर्मिनल भी इन दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इस वाले रेसिस्टर से और इस वाले रेसिस्टर से। और यही आर इस वाले और इस वाले रेसिस्टर से भी जुड़ा हुआ है। तो यही मेरा कॉमन आर है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये के आर स्क्वायर हो गया, ये आर बाई के हो जाएगा। और यहाँ पे ये है के स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा स्मॉल आर। अब आप रेशियो लेकर के देखोगे तो के आर अपॉन आर बाई के इज इक्वल टू के स्क्वायर आर अपॉन आर। तो यहां से आप देखोगे ना, आर से आर कैंसिल हो गया, तो इट इज कमिंग आर से आर यहाँ भी कैंसिल, एंड इट विल बिकम के स्क्वायर, के गोस टू थर्ड प्लेस, के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। रेशियो सेम है, तो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी कि ये वाला जो सर्किट है बीच में से जो रेसिस्टेंस है ये आप हटा सकते हैं। अब ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, और फिर दोनों पैरेलल में, यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग। हाउ वी नो दैट आई जी इज जीरो? It's a common information that you should know when you are solving the Wheatstone. Other ways, there are other ways to find out why this Ig is zero. कि आप KVL जब उसमें अप्लाई करोगे, when you are applying the KVL to that point, at that point you will also know कि हाँ यहाँ पे इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा। ठीक है, क्लियर है? जो नॉर्थ एंड मिडिल एंड मान जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ वी नो दैट Ig इज जीरो, तो Ig जीरो कब है, ये तभी आपको पता चलेगा तब जब आप केवीएल लगा करके देखो। ठीक है ना, तो आपको केवीएल लगाना पड़ेगा, दो लूप बनेंगे, दोनों में केवीएल लगाओ एंड देन यू विल सी। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं ना, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, लेट मी शो यू दिस। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, दिस इज फॉर द बैलेंस्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो जब भी बैलेंस्ड बीट स्टोन होगा तो मिडल वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, देर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द मिडल ब्रांच। चलो, अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और डीसी मीटरिंग डिवाइस भी इन्हें हम बोलते हैं, डायरेक्ट करंट मेजरिंग डिवाइस। सो गैल्वेनोमीटर का जो मेजरिंग एलिमेंट होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब इट विल मेजर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइप ऑफ करंट, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ऑफ द करंट इट विल। ठीक है, इसमें वी दिस गैल्वेनोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ दिस पॉइंटर इन द मैग्नेटिक करंट and magnetic properties and magnetism may, when we will also discuss this, so that is why I'm having a very brief discussion of galvanometer, so that you will have a value of it in your mind. ठीक है, moving coil galvanometer is a topic in magnetic effect of current, so in that case we will discuss more elaborately. ठीक है, तो ये ऐसा होता था प्रीवियस है, बहुत पुराना ओल्ड मॉडल है। इसमें क्या होता है, एक कॉइल लगी होती है, स्प्रिंग कॉइल, और ये यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर होता है। मैग्नेटिज्म की वजह से देयर विल बी अ टॉर्क अप्लाइड टू दिस व्हेन द करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, उस टॉर्क के मूवमेंट की वजह से ये पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है। देयर इज अ लिमिटेशन ऑल्सो, ये पॉइंटर सिर्फ लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ही मूव कर सकता है, तो दिस इज ऑल्सो द लिमिट ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं। तो द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्योंकि उसी करंट पे ही क्या दिखाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर उससे ज्यादा आपने करंट इसमें प्रोवाइड कर दिया, इफ यू प्रोवाइड करंट मोर देन द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये जो है फ्यूज आउट हो जाएगा, बर्न। ठीक है, अब इसमें सबसे जरूरी चीज क्या आती है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अमीटर इज आल्सो अ करंट मेजरिंग डिवाइस, बट इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ करंट मेजरिंग। तो जहां galvanometer is only capable of measuring milli ampere or micro ampere, it will measure the current in terms of ampere। ठीक है, क्लियर है? एंड वो हम अकॉर्डिंग टू अ सेट कर सकते हैं कि हम अमीटर की क्या रेंज रखना चाहते हैं, और अमीटर की रेंज को चेंज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई ए शंट रेजिस्टेंस। दिस एस इज कॉल्ड व्हाट, शंट रेजिस्टेंस।
ठीक है। अब देखो यहां से कोई भी करंट आएगा, आई लेट्स से, तो फुल स्केट दिखाने के लिए इसमें कितना करंट जाना चाहिए, आई जी जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना करंट आएगा अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल ऑल्सो, आई माइनस आई जी। ठीक है। तो दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस शंट रेसिस्टेंस। और आप देख सकते हो कि शंट रेसिस्टेंस एंड दिस जी, जी इज द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, जी इज व्हाट, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, मीटर रेसिस्टेंस। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिस जी एंड दिस एस इज इन पैरेलल। तो द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड इज आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस टू बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 2 एम्पियर। तो वहां पे आपको आई जी की वैल्यू भी गिवन होगी, लेट से 1 मिली एम्पियर। और आपको पूछेगा कि आई जो कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है, दैट इज वी हैव टू मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस अमीटर, इज 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर का अमीटर डिजाइन करने के लिए हाउ मच शंट रेसिस्टेंस भी रिक्वायर्ड, तो वो यहां से आ नहीं जाएगा। जी भी आपको प्रोवाइड होगा, आई जी भी प्रोवाइड होगा, आई भी प्रोवाइड होगा। तो यहाँ से आप शंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई जी को कैलकुलेट करने के लिए आई इंटू एस, दिस इज शंट, जी प्लस एस। ठीक है, क्लियर है। नाउ सिमिलरली अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बना, ये यहाँ पे वोल्ट मीटर आएगा भाई, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, एज नेम अपीयर्स। तो ये वोल्ट मीटर मेजर करता है व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे ये जी है और ये एस है, और लेट्स से दिस इज आर। तो आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी इंटू वी बाई वी जी माइनस। ठीक है। तो इसमें भी क्या कहेगा, अगर मुझे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर चाहिए, जिसके लिए वीजी की वैल्यू लेट से 5 वोल्ट है एंड गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 10 ओम है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है। तो उस केस में रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, जी इंटू वीजी, वी बाई वीजी माइनस 1। ठीक है। देखो वाई वी आर अटैचिंग दिस, जब आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको शंट रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाना होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है सिर्फ ये, दिस एंड दिस, दिस इज जी द गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। इसके पैरेलल में अगर आपने कोई रेसिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। अगर इसके सीरीज में कोई रेसिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। मतलब शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या बहुत बड़ी होनी चाहिए या बहुत छोटी होनी चाहिए, बताओ। एंड सिमिलर क्वेश्चन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस आर शुड बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, दैट इज वी आर अटैचिंग। ठीक है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो सम क्वेश्चन सॉल्विंग इज देयर, so we will be having in our next session जब भी हमें मौका मिलेगा, और we will start with a fresh chapter also. ठीक है। So till now, I hope that you have enjoyed the session, and any kind of doubt will be entertained right now. तो जब भी आप, मैं पोल शेयर करता हूँ ना, ये क्लास फीडबैक वाला पोल, इसमें ना 5 क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप स्क्रॉल करके 5 के 5 का आंसर किया करो। क्लियर है, मैंने लॉन्च कर दिया, आप आंसर करो। तब तक किसी को, इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, क्लियर। डाउट अभी आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। चलिए, थैंक यू सो मच।